A very good morning, student. Welcome again in this video. So children, today once again we will discuss about the topic patterns. Okay. So first we will know what are patterns. Patterns क्या होते हैं? So children, when the objects, the terms are arranged in a specific order or a specific sequence, तो then they form a patterns. Okay. क्या होते हैं? जब हम किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को और किन्हीं टर्म्स को एक प्रॉपर स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं तो तब वो एक पैटर्न्स बनाते हैं. ओके. सो द पैटर्न्स कैन बी ऑफ नंबर्स, ऑफ लेटर्स, ऑफ सिम्बल्स और शेप्स. ओके. पैटर्न्स में क्या है, हम नंबर्स भी हम लिख सकते हैं अरेंज करके और लेटर्स और सिम्बल्स. Okay, so we have the different types of patterns. Patterns of numbers, patterns of shapes, or patterns of letters. Okay. So when the numbers are written in an increasing order, तो then they form a increasing patterns. Okay, जब हम numbers को एक increasing order में लिखते हैं तो तब क्या बनाते हैं, वो एक increasing पैटर्न और अ ग्रोइंग पैटर्न्स. क्या कहते हैं उसको? अ ग्रोइंग पैटर्न. ओके. व्हेन द नंबर्स आर रिटन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर देन दे फॉर्म अ डिक्रीजिंग पैटर्न्स एंड द पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग पैटर्न और अ रिड्यूसिंग पैटर्न्स. ओके. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नंबर्स पैटर्न, इंक्रीजिंग पैटर्न्स और अ ग्रोइंग पैटर्न्स, एंड द सेकेंड इज अ डिक्रीजिंग पैटर्न और अ रिड्यूसिंग पैटर्न. Okay, here we have solved some examples of the increasing and decreasing order, decreasing patterns. So today I have given you some exercise work which I will explain first, then you will do in your notebook. Okay. Okay, so this is your first question of your worksheet. Here this is, look at the following patterns and write them using the numbers. आपको क्या करना है, यहाँ पे ये स्टार्स बनाए हुए हैं तो यू हैव टू काउंट दीज स्टार्स एंड राइट देयर नंबर्स. ओके. तो इन द फर्स्ट here are 2 stars. Okay. तो what is the number will? 2. You have to write here 2. Okay. And in next, here the 5 star, 1, 2, 3, 4, 5. So you have to write here 5. Okay. And in the next, here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So total are 8 stars. So you have to write your number 8. Okay. And in the next term, here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So how much? These are total 11s. So you have to write here number 2, then 5, then 8 and then 11. ओके. तो यहाँ पे पैटर्न्स क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. कैसे है नंबर्स? इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. एंड द रूल इज, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 2 है, देन here in the first term 2, then next is 5 and next is 8, then next 11. ओके. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 then 3 4 क्या है, स्किप है, मीन्स 2 डिजिट्स आर स्किप. ओके. एंड देन 5, then 6 7 are skipped, then 8, then 9 10 are skipped. So you can say 2 digits are skipped, or here the 3 numbers is added. Okay. 2 plus 3 is 5. So you have to write here like this. Okay. Plus 3. 2 plus 3 is 5.
and 5 plus 3 is 8, and again 8 plus 3 is 11. Okay, so 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, and 8 plus 3 11. So here the patterns is in increasing order and rule is add 3. क्या है यहाँ पे रूल, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? Here the number 3 is added with before numbers. Okay, previous numbers के साथ क्या हो रहा है? 3 added हो रहा है. Then we find the next number. So you have to write the digits also and you have to write the rules also. Okay, आपको क्या करना है जब आप नोटबुक में करोगे तो you have to draw these stars and write your numbers and also write the rules. Okay, आपको रूल भी लिखना है और पूरे इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको काउंट करके then you have to write the numbers also. Okay, and in next here you have to also count these stars and write here the number. Okay, तो यहाँ पे आपको टोटल काउंट करना है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो कितना है यहाँ पे 12. And in next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So in next is 10. Then 1 2 3 4 5 6 7 8. And then 1 2 3 4 5 6. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पैटर्न्स इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, फर्स्ट क्या है 12 है, देन 10, then 8, then 6. Okay, so this is a reducing or a decreasing pattern. Okay, and you have to write here rule also. कितने यहाँ पे माइनस हो रहे हैं तो you have to write here rule also and numbers also. Okay, so you will do this by yourself. And in next again count 2, then 4, then 6, then 8. So it's also again an increasing patterns. कैसा है यहाँ पे, अगेन अ ग्रोइंग पैटर्न्स और एन इंक्रीजिंग पैटर्न. ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. write the next 3 terms in each sequence. Okay, you have to write 3 terms also and you have to first observe the patterns, then you will write the next 3 terms. Okay, so in the first here is 1, then 4, then 7, then 10, then 13. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 3 नंबर्स क्या है, 3 नंबर्स इज एडेड विद द प्रीवियस नंबर. ओके, 3 नंबर्स क्या हो रहा है, प्रीवियस नंबर के साथ प्लस हो रहा है. तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, and 13 + 3 next will be 16, then 16 + 3 again next will be 19, and 19 + 3 is 22. Okay, so you have to write here number 16, then 19, then 22. Okay, and in the next question the numbers are 3, 8, and it is a again also it is a growing patterns. कैसा पैटर्न है ये, ग्रोइंग पैटर्न. Again in the next the first term is 3, then 8, then 13, then 18, then 23. तो here the number 5 is added. क्या रूल है यहाँ पे, 5 नंबर क्या हो रहा है, added with the previous number. Okay, तो 3 + 5 is 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, and 23 + 5 here you will write here 28, and 28 + 5 33, and 33 + 5 again 38. So you have to write here 3 digits 28, 33, and 38. Okay, here in the next question the patterns is with numbers and letters also. यहाँ पे हमने क्या किया, numbers भी used है and letters भी used है, and both are in an increasing order. Okay, so here the first is 5p
and next is 6Q and next is 7R then 8S. ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर्स क्या हो रहे हैं, 1 by 1 इंक्रीज होते जा रहे हैं. 5 है, देन नेक्स्ट 6, 7, 8. तो नेक्स्ट विल बी क्या होगा 9. ओके, एंड लेटर्स, व्हाट इज द लेटर, तो देखो P देन Q देन R देन S देन नेक्स्ट विल बी T. ओके, तो here the first term is 9T. ओके, एंड अगेन नेक्स्ट 9 के बाद 10 एंड T के बाद क्या आता है U. ओके, STU. तो द नेक्स्ट विल बी 10U देन ओके 11V UV. ओके, PQRSTUV and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so both the numbers and letters are in an increasing order. Okay, so it's also a growing pattern. Okay, in the next question, here the digits are 20Z. Okay, and next is 18Y and next is 16X and next is 14W. Okay, तो you have understood क्या है यहाँ पे. देखो डिजिट्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड रूल्स इज -2. 2 डिजिट्स क्या है यहाँ पे, 2 डिजिट्स स्किप है और माइनस है, सब्ट्रैक्ट है. तो रूल्स इज सब्ट्रैक्ट बाय 2. द सेकेंड नंबर्स इज सब्ट्रैक्ट बाय 2 बाय द प्रीवियस नंबर. ओके, तो 20 है, देन 18, देन 16, देन 14 एंड नेक्स्ट विल बी 12, देन 10, देन 8. एंड हियर लेटर्स, लेटर्स क्या है, लेटर्स आर इन अ रिवर्स पैटर्न. कैसे हैं, बैक से फॉरवर्ड की तरफ है. देखो जेड से स्टार्ट हो रहा है, जेड इज़ द लास्ट अल्फ़ाबेट्स, एंड देन वाई, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू से पहले क्या आता है, हियर वी. तो here the next digit term will be 12V and 12 के बाद 12 से पहले यहाँ पे क्या आएगा 10 and V से पहले क्या आता है U. तो 10U and next digit next term will be 8T. ओके, तो क्या जाएगा यहाँ पे, देखो T U V W X Y Z and 8 10 12 14 16 18 and 20. ओके, 2 नंबर्स का क्या है, डिफरेंस है, एंड पैटर्न इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, तो इट्स अ रिड्यूसिंग पैटर्न. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स बाय स्पॉटिंग द पैटर्न्स. सो यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड राइट द मिसिंग नंबर. ओके, हियर द फर्स्ट, तो यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑल्सो. आपको पहले स्पॉट करना है कि कितने यहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस है. तो पैटर्न्स इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट हाउ मच नंबर्स आर हियर एडेड. तो फर्स्ट इज 1 है, देन 5. तो 1 2 3 4 3 डिजिट्स आर स्किप्ड, देन नेक्स्ट इज 5. ओके, तो अगेन 5, then 6, 7, 8 will be skipped और next number will be here 9. Okay, देखो 1 2 3 4 3 नंबर्स हमने क्या कर दे, स्किप कर दे, एंड द आंसर इज 5. एंड 5 के बाद 6 7 8 हमने क्या कर दे, स्किप, देन द नेक्स्ट नंबर विल बी 9. एंड अगेन 11 12 10 11 12 3 digit will be skipped and the next number is 13. And 13, after 13 14 15 and 16 will be skipped and the next number will be 17. Okay, and 17 के बाद देखो 18 19 20 are skipped and the number is 21. And after 21 the 22 23 and 24 3 digits are skipped. Then again the next number will be here 25. Okay,
and after 25 the 26, 27 and 28 three digits are skipped and the number is next 29. Okay, so here the answer will be 1, 5, then 9, then 13, then 17, then 21, then 25 and then 29. Okay, so we can say here the five numbers is added with the previous number. Sorry, 4 numbers are added with the previous number, and we can say also the 3 digits are skipped. Okay, here the next question is 34, then 31, 28, and here you have to observe the patterns. You have to spot the how much digits are skipped here, and it's also in a decreasing order. It's a reducing pattern. So you have to find out the what will be the next 2 digits and what will be the next after 19. Okay, so this question you have to do by yourself. Okay, in the next question here यहाँ पे देखो 34, 32 and 33, 32, 30 3 digits are skipped. Then 31 again 31, 30, 29 and 27 3 digits are skipped. Then 28. Okay, तो इसी तरह से आपको ये पूरा पैटर्न्स ऑब्जर्व करके and you have to write here numbers. Okay, so this you have to do by yourself. And the next is देखो 100, first term is 100, then the next digit is 110, 100, 110, and what will be the next 120. 10 numbers are added here. What is the rule? Rule is 10 added 10 with the previous number. previous number के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे 10 numbers add हो रहा है. ओके, तो 100, next is 110, next will be 120, then 130, and next is 140, and then here what is the number you have to write here all. Okay, ये आपको खुद लिखना है. In the next question here it's very simple. देखो अल्फ़ाबेट्स हैं and alphabets are in increasing order. Okay, so first is AB. First term is AB, and the second term here the third term, then GH, and the next IJ. Okay, so what will be the second term? देखो AB, then CT. Okay, then EF, then ZH, then IJ, then KL. So you have to write the 3 terms here. Okay, first is AB, and next will be CD, and the third will be EF, and the next is ZH, then IJ, and the last will be J के बाद क्या आता है KL. Okay, so this is the your exercise work for today, and you have to write this work in your notebook in neat and clean handwriting. Okay, and you have to not submit this work in Ursal because this is a non-submitted worksheet. Okay, so now the chapter has over, and I hope you have understood this chapter, because in today online class I have also discussed this chapter, this topic, and I hope now you have understood this chapter. So in the further chapters, further worksheet, we will revise our syllabus, term 1 syllabus. Okay, हम अब क्या करेंगे, अपना term 1 syllabus का revision करेंगे from Monday. So this is the last worksheet of this chapter 13. Okay, thank you.